Welcome, dear students. We all are aware that in every business, whether there will be a profit or a loss, there is always some element of uncertainty, and that element of uncertainty is known as risk. A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that is caused by external or internal reason and that may be avoided through preventive action is termed as a risk. Types. Sorry. Systematic risk. Systematic risk influences a large number of assets. A significant political event, for example, could affect several of the assets in your portfolio. It is virtually impossible to protect yourself against this type of risk. नॉर्मल आप मान लीजिए ना, आप कहीं से ऑर्डर ले रहे हैं, सपोज कीजिए इंडिया ही और पाकिस्तान का ही बात कर रहे हैं. यूएसए की किसी कंपनी ने इंडियन किसी कंपनी को जीन्स बनाने का ऑर्डर दिया और जीन्स के लिए जूट आना पाकिस्तान से, और इसी बीच में कुछ टर्मोइल हो गया और सारा नेचुरली टर्मोइल हो गया तो सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएंगे. अब पता चला कि उसका ऑर्डर जो है वो लर्च में पड़ गया और उसका गुडविल पड़ा हुआ है इन्फ्लुएंस में. Unsystematic risk. Unsystematic risk is sometimes referred to as specific risk. This kind of risk affects a very small number of assets. An example is news that affects a specific risk, such as sudden strike by employees. Credit or default risk. Credit risk is the risk that a company or individual will be unable to pay the contractual interest or principal on its debt obligation. Country risk. Country risk refers to the risk that a country won't be able to honor its financial commitments. Foreign exchange risk. When investing in foreign countries, you must consider the fact that currency exchange rates can change the price of asset as well. डॉलर का प्राइस बढ़ गया तो नेचुरली वहाँ जो आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं वो आपके लिए महंगा हो जाएगा, और हो सकता है ऐसे में आपका सारा प्रॉफिट मार्जिन गायब हो जाए. अगर रेट ज़्यादा फ्लक्चुएट कर गया तो फिर आप तो दिक्कत में पड़ेंगे. इंटरेस्ट रेट रिस्क. Interest rate risk is the risk that an investment's value will change as a result of change in interest rates. Political risk. Political risk represents the financial risk that a country's government will suddenly change its policies. Market risk. This is the most familiar of all risks, also referred as volatility risk. Market risk is the day-to-day fluctuation in a stock price. Return. रिस्क के बदले में रिस्क लेने का रिवार्ड है रिटर्न. A return is the gain or loss of a security in a particular period. The return consists of the income and the capital gains relative on an investment, and it is usually quoted as a percentage. ROI return on investment बोलते हैं या ROE return on equity. Types. Return on investment is calculated by dividing the cost of the investment by the difference between the cost of the investment and the gain in the investment. Return on equity. Return on equity or ROE is another commonly used measure of return used by those analyzing business performance. In this case, a company's net income is the gain or loss, and the cost is the average of the company's equity. ROE is used by investors looking for a return on the company's equity capital. Return on asset. It is commonly used as a measure of return by those analyzing financial stocks. प्रॉफिट. प्रॉफिट के टाइप्स हैं नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सब नॉर्मल, शॉर्ट रन या लॉन्ग रन प्रॉफिट. द थ्योरी ऑफ द फर्म, रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रोडक्शन फंक्शन, इनसे ये सारा चीज डिराइव होता है. प्रॉफिट. टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, and it is the reward for enterprise. Profit helps in the process of directing resources to alternative uses in free markets. Relating price to cost help a firm to assess profitability in production. प्रॉफिट क्यों नेसेसरी है? ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए, R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, मार्केट शेयर दिलाता है, और क्या करता है, लेयर करता है इन्वेस्टर को,
इन सारी चीज़ों के लिए प्रॉफिट जरूरी है। प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू कीप अ फर्म इन इट्स करंट लाइन ऑफ प्रोडक्शन। Abnormal or supernormal profit, profit made over and above normal profit. Abnormal profit may exist in situation where firms have market power. Abnormal profits may indicate the existence of welfare losses, could be taxed away without altering resource allocation. Subnormal profit, profits below normal profit. Firms may not exit the market even if subnormal profit made, if they are able to cover variable cost. जब वेरिएबल कॉस्ट से भी कम अगर मिल रहा है तब तो फिर निकलेगा। नॉर्मल इस चीज को ऐसे समझिए कि आप एक ऑमलेट बेच रहे हैं और ऑमलेट की कीमत आपने अंडे की कीमत से कम रखी हुई है, आपको शट डाउन करना पड़ेगा, फर्म का बिजनेस बंद करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ एग्जिट में भी हाई, कई बार क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ एग्जिट जो है वो भी हाई है, तो हम सिर्फ उस चक्कर में नहीं निकल रहे हैं। सब नॉर्मल प्रॉफिट में भी टेम्पररी और परसीव्ड एज सच। प्रॉफिट, assumption that firms aim to maximize profit may not always hold true. There are other objectives. Profit maximizing output would be marginal cost equals MR, marginal revenue, और ऑप्टिमम, ये अगर MR कर्व है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में और ये MC कर्व है तो ये आपका ऑप्टिमम क्वांटिटी हुआ। यहाँ पर भी है MC MR के बराबर, लेकिन उसके लिए दूसरा कंडीशन क्या है कि MC शुड बी राइजिंग, तो ये होगा आपका ऑप्टिमम। यहाँ दिखा रखा है, इफ द फर्म वेयर टू प्रोड्यूस द 400 यूनिट, द लास्ट यूनिट वुड कॉस्ट टू प्रोड्यूस, देन इट अर्न्स इट्स रेवेन्यू। देखिए इस ग्राफ को। थैंक यू।